Assalamualaikum viewers. Today we will discuss personality assessment and personality disorders. So first we will discuss personality and personality assessment, in which we will first discuss what is personality. Personality, the combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character. यहाँ पे ये कहा गया है कि पर्सनैलिटी ऐसी खूबियों का, ऐसी खसूसियात का कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाती है. So on the next slide we will discuss that what are the personality types. Here are 9 types of personalities: perfectionist, helper, achiever, romantic, thinker, questioner, adventurer, leader, peacemaker. So continue to the next slide, we will see what is personality assessment. Personality assessment assists counselors in understanding the behavior of a particular individual. जब हम एक बंदे की पर्सनैलिटी को असेस कर लेते हैं तो हम उस पर्सन के बिहेवियर को भी समझ जाते हैं. Helps counselor come to a conclusion about a possible future course of action. Helps counselor make predictions about a person's unique future behavior. So continue to the next slide, we will discuss what are the types of personality tests. Number 1, interview. Number 2, behavioral observation. Number 3, projective tests. Number 4, objective tests. First, we will discuss what is interview. An interview is a conversation between 2 or more people where questions are asked by the interviewer to elicit facts or statements from the interviewee. इंटरव्यू में 2 या 2 से ज़्यादा लोग इंटरव्यू से क्वेश्चन करते हैं उसको हायर करने के लिए, जॉब के लिए, और उसके बारे में कुछ मालूमात लेने के लिए. In the next slide we will discuss what is behavioral observation. Behavioral observation is drawing conclusions about an individual's personality based on observations of his or her behaviors. Behavior observation में हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्टली विद आवर आई और हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कंक्लूजन्स निकालते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है. Next we will discuss what are the projective tests. Tests that provide ambiguous stimuli designed to trigger projection of one's inner dynamics. ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो किसी की अंदरूनी कैफियत को जानने के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम जान सकें कि वो अंदरूनी तौर पर क्या महसूस कर रहा है, उसकी अंदरूनी दिमागी सेहत कैसी है. Types of projective tests. There are 2 types of projective test: thematic apperception test, Rorschach Inkblot test. So next we will discuss what is thematic apperception test. So here is our uncle Henry Murray जिन्होंने हमारा thematic apperception test इंट्रोड्यूस करवाया था. Developed by Henry Murray, this test allows people to express their inner feelings and interests through stories they make up about ambiguous scenes and pictures. ये एक ऐसा टेस्ट है जिनमें लोगों को हम कार्ड्स दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं और वो हमें देख के बताते हैं कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है और वो उस पिक्चर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एक स्टोरी बना के देते हैं. Here are some examples of TAT, means thematic apperception test. Okay, in next slide we will discuss what is Rorschach's Inkblot test. Here is our uncle Rorschach. Okay, a test composed of 10 ink blots designed by Hermann Rorschach that seeks to identify people's inner feelings by analyzing their interpretations of blots. 10 इंक ब्लॉक का ये सेट है जिसको देख के लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इंक ब्लॉट हमें क्या कह रहा है, यानी ये इंक ब्लॉट किस चीज़ की पिक्चर है, इमेज है, जिसकी वजह से हमें लोगों की इनर फीलिंग्स का पता चलता है. Next point is Rorschach test attempts to measure personality using unconscious reactions to the images.
जब लोग उस पिक्चर को अनकॉन्शियस रिएक्शन देते हैं तो हम लोगों की पर्सनैलिटी को इजीली मेजर कर सकते हैं। These are two images of Rorschach Inkblot test. Okay, continue to the next slide. We will discuss that what are the objective personality tests. Objective personality tests present statements rather than ambiguous stimuli, characteristics of projective tests. प्रोजेक्टिव स्लाइड में हम एम्बिगुअस स्टिमुलाई की जगह पे कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, ये स्टेटमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। सम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट्स आर MMPI, Q-sort, MBTI. Okay, in the next slide we will see that what is MMPI. MMPI means Minnesota Multiphasic Personality Inventory. This inventory assists psychologists in identifying personality structure and psychopathology. Next, we will discuss what is Q-sort. In Q method, participants are asked to sort a set of statements representing a broad diversity of opinions and perspectives on the phenomenon being investigated. Okay, Q sort में रिस्पोंडेंट्स को स्पेसिफिक कार्ड्स दिए जाते हैं जिन पे नंबर लिखे होते हैं और हर कार्ड एक स्टेटमेंट यानी कि एक क्वेश्चन पे मुनहसिर होता है। हर कार्ड पे एक क्वेश्चन लिखा होता है। फिर रिस्पोंडेंट को एक स्कोर शीट दी जाती है और उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट से लीस्ट इम्पोर्टेंट तक की क्लासिफिकेशंस होती हैं। फिर जो रिस्पोंडेंट हमारा फर्स्ट कार्ड पकड़ता है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो अगर उसकी लाइफ में लीस्ट इम्पोर्टेंट है तो वो उसको -4 पे रख देगा, अगर उससे कम इम्पोर्टेंट है तो -3 पे रख देगा, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो -4 पे रख देगा। इसी तरह वो सारी स्टेटमेंट्स को लाइन अप करता है। सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ MBTI. The Myers-Briggs Type Indicator is an introspective self-report questionnaire designed to indicate psychological preferences in how people perceive the world and make decisions. मेयर ब्रिग्स ने कुछ ऐसे पर्सनैलिटी के इंडिकेटर्स डिज़ाइन किए जिनकी बिना पर हम लोगों की साइकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि लोग बाहर की दुनिया को कैसे परसीव करते हैं और कैसे फ़ैसले लेते हैं। एंड दीज आर सम पर्सनैलिटी टाइप्स कीज: एक्सट्रोवर्ट्स, सेंसर्स, थिंकर्स, जजर्स, इंट्रोवर्ट्स, इंट्यूटिव्स, फीलर्स एंड परसीवर्स। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. Our first personality disorder is Antisocial Personality Disorder, ASPD. Pervasive pattern of disregard for rights of others since the age of 15 as shown by at least 3 of the following. ASPD disorders के जो मरीज़ होते हैं वो 15 साल की उम्र से ही दूसरों की फीलिंग्स को डिसरिगार्ड करते हैं। जो इनकी डिसऑर्डर को स्पेसिफाई करती हैं वो हैं एक्सप्लॉइट, मैनिपुलेट और वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स, लैक कंसर्न, रिग्रेट और रिमोर्स अबाउट अदर पीपल्स डिस्ट्रेस, behave irresponsibly and show disregard for normal behavior, have difficulty sustaining long-term relationships, unable to control their anger, lack guilt or not learn from their mistakes, blame others for problems in their lives, repeatedly break the law. अगर इन तमाम बातों में से 3 सिम्टम्स भी एक पर्सन में पाई जाती हैं 15 साल की उम्र से लेकर, तो वो शिकार हो चुका है ASPD मीन्स एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। ट्रीटमेंट: Psychotherapy, also called talk therapy, is sometimes used to treat antisocial personality disorder. Therapy may include, for example, anger and violence management, treatment for substance abuse, and treatment for the other mental health conditions. ASPD को हम साइकोथेरेपी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं।
साइकोथेरेपी की वजह से हम एंगर एंड वायलेंस को भी मैनेज कर सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ का भी ट्रीट कर सकते हैं और अदर मेंटल हेल्थ कंडीशंस का भी हम ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट disorder we will discuss is borderline personality disorder, means BPD. Presence of 5 or more of the following in many contexts beginning in early childhood. अगर 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स बचपन में पाई जाएंगी तो वो पर्सन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। फील वेरी वरीड अबाउट पीपल अबैंडनिंग यू, have very intense emotions that last from a few hours to a few days and can change quickly. No, have a strong sense of who you are and it can change depending on who you are with. Find it very hard to make and keep stable relationships. Act impulsively and do things that could harm you. Have suicidal thoughts or self-harming behavior. Feel empty and lonely a lot of the time. Get very angry and struggle to control your anger. बेसिकली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में 2 टाइप्स पाई जाती हैं इंसान में। उस बंदे की जो थिंकिंग वगैरह होती है वो भी पोलराइज्ड होती है, या तो वो ये कहता है कि दुनिया बिल्कुल रंगीन है या बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, ऑल और नथिंग, गुड और बैड। इनके दरमियान में कोई चीज़ नहीं है उस इंसान के लिए। नाउ वी विल सी इट्स ट्रीटमेंट। The therapy helps people change unhealthy patterns of behavior by becoming more mindful about the emotions and reactions they are experiencing in the moment. Borderline personality disorder को हम dialectical behavior therapy के ज़रिए ट्रीट करते हैं। ये थेरेपी लोगों के बिहेवियर के अनहेल्दी पैटर्न को हेल्दी पैटर्न में चेंज करती है और लोगों के उन इमोशंस को चेंज करती है जो वो उस मौके पे फील कर रहे हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर वी हैव इज़ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, NPD. Presence of 5 or more of the following in many contexts beginning in early childhood. They have a grandiose sense of self-importance. अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ हम ही हैं। They live in a dream world of exceptional success, power, beauty, genius और perfect love. वो सिर्फ फैंटेसीज में ही रहते हैं। They think of themselves special or privileged and that they can only be understood by other special or high status people. वो अपने आप को स्पेशल समझते हैं और वो ये समझते हैं कि हमें सिर्फ हाई स्टेटस के लोग ही समझ सकते हैं। They demand excessive amount of praise or admiration from others. वो चाहते हैं कि हमें दूसरे सबसे ज़्यादा एडमायर करें। They feel entitled to automatic deference, compliance और favorable treatment from others. वो चाहते हैं कि हर टाइम हर कोई हमारी खुशामद करता रहे। They are exploitative towards others and takes advantage for them. दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और उससे फ़ायदा लेते हैं। They lack empathy and do not recognize or identify with other feelings. दूसरों की फीलिंग्स का एहसास नहीं करते। They are frequently envious for others or think that they are envious of him or her. ये लोग अक्सर दूसरों से हसद करते हैं या ये समझते हैं कि मैं उससे हसद करता हूँ। They have an attitude or frequently act in haughty or arrogant way. सो अब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट फॉर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी. मेडिकेशंस may be included in your treatment if you have other mental health conditions. टॉक थेरेपी के ज़रिए हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं, मींस दैट साइकोथेरेपी। और अगर इसके साथ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ हमें और भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं तो उसके लिए
आप मेडिकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट विद द एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स. Okay guys, so this brings us to the end of our presentation. Thank you. Allah Hafiz. See you in next presentation.